Pakistan is desperately trying to create an atmosphere of terror in the Jammu division of the Union Territory Jammu and Kashmir, which has remained relatively peaceful as compared to the Kashmir division. The Union Territory of Jammu and Kashmir comprises two divisions, Kashmir and Jammu, which are separated by the mountainous wall of Pir Panjal range. While Muslim-majority Kashmir has witnessed lots of terrorism and bloodshed since 1988, Hindu-dominated Jammu has remained comparatively peaceful, although there have been occasional bomb blasts, suicide attacks, or ambush attacks. However, over the last few months, Jammu division has witnessed a substantial increase in the frequency of terror attacks. And more significantly, the terrorists are no longer confining their activities to Rajouri and Poonch districts, which are located along the Line of Control (LOC) or the de facto border with Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. They are now striking even deep inside, in districts like Udhampur, Rayasi, and Doda. From the 9th of June to the 12th of June, which is a span of 4 days, there were 4 terror attacks in various parts of Jammu division, in which 9 Hindu pilgrims and a security man were killed and 40 injured, including 5 army personnel. These attacks took place in Rayasi, Kathua, and Doda districts. 2 terrorists who carried out an attack in Kathua district were killed in an operation that lasted over 12 hours. A large quantity of arms and ammunition was recovered from the slain terrorists, who had suspectedly infiltrated recently from Pakistan. However, the terrorists who attacked a pilgrim bus in Rayasi and a security picket in Doda are still at large. Earlier, last month, terrorists attacked a convoy of Indian Air Force near Shasitar in Poonch district, killing 1 personnel and leaving 4 others injured. In April, a 40-year-old villager was shot dead by terrorists near Shahadra Sharif area of Tanamandi area of Rajouri district. In the same month, a village defense guard, Mohid Sharif, was killed in Bazantgar area of Udhampur after the latest string of attacks. Additional Director of Police Jammu, Anand Jain, said it reflected a desperate bid by our hostile neighbor, a reference to Pakistan, to disturb peace in Jammu division. Jammu and Kashmir Director General of Police, R.R. Swain, also talked about the role of Pakistan in these terror attacks. The police chief said the starting point of these terror acts was across the border, implying Pakistan. The DGP said Pakistan is sending mercenaries to disturb the peaceful atmosphere in Jammu as it is no longer able to motivate the locals as in Kashmir to do the same thing. अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है, हमारा डिफिकल्ट टेरान है, जंगल है, पहाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनजर इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको खासकर जामू जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है। ये एक सच्चाई है सर। अब अगर आप ये पूछते हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पांस जो है, हम अपना रिस्पांस बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता जरूरत से ज्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में, जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल कर, हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालें। हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए, और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हैं, उनको नास्तो नाबूद कर देना। The worrying development has been discussed at the top level in the government, with Prime Minister Narendra Modi taking stock of the situation and directing authorities to crush terrorism with all force at command. Union Home Minister Amit Shah
also reviewed the situation in Jammu and Kashmir. He has called an elaborate meeting on coming Sunday to discuss the situation in detail, especially in view of the upcoming Amarnath Yatra. In the coming days and weeks, we hope and expect to see a major crackdown on terrorism in Jammu. Thanks for watching this video. Please like and share and subscribe to this channel if you haven't already.